Namaskar and welcome to this episode of Health for All. Now we start a first session on yoga. So today we are going to talk about not hyperthyroidism, we are going to talk about hypothyroidism. A lot of difference in hypo and hyper. So what is the difference? First, let us know that everybody talks about I have thyroid. Nobody talks about which kind of thyroid they have. Okay. So one is when your thyroid glands are underactive is when you have hypothyroidism. So you need to activate them. Now in hyperthyroidism, you lose weight. In hypothyroidism, you gain weight. Okay, and that's why it is more important that you exercise or you do yoga or you do pranayam during hypothyroidism. Okay, now apart from strength training, there are certain poses which can help you in yoga to activate your gland. Okay, since the gland is located here in the neck, आपका gland neck के पास होता है, तो आप नेक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, आप ब्रीद इन करिए, पीछे ले जाइए, ब्रीद आउट नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन, ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट, सांस अंदर ले, सांस बाहर छोड़े, अंदर ले, बाहर छोड़े. कितने बार कर सकते हैं? अब नेक एक्सरसाइजेस तो आप दिन में मतलब बहुत बार कर सकते हैं. नेक एक्सरसाइजेस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू मोर टाइम्स. आप टीवी देख रहे हैं, आप नेक एक्सरसाइजेस करिए, सामने आप नेक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. तो नेक एक्सरसाइजेस को आप एक्सरसाइज ना समझ के, तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लुकिंग एट द ऑपोजिट शोल्डर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. We are basically trying to activate all the neck muscles, which thereby can activate your thyroid gland. Okay. Similarly, bending to the side. Breathe in, breathe out. Breathe in. आप जब योगा कर रहे हैं तो आपकी सांस से कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है. तो आप हमेशा याद रखिए कि every exercise or every movement you are doing in yoga, you are connecting with your breath. Very, very important. Okay. The next exercise, which is one of my favorite exercise, that is basically cat and camel. As you see, we actually extend our neck in cat and camel. So come on all the fours. आप crawl position में आ जाएं. याद रखें, जब आप crawl position में आ रहे हैं तो आप कैसे आ सकते हैं crawl position में? आपका elbow आपके नी के पास रखिए और आप सीधे हो जाइए. तो दिस इज योर करेक्ट क्रॉल पोजीशन. योर शोल्डर विल बी राइट डाउन द रिस्ट, सो दे विल बी इन वन स्ट्रेट लाइन. ओके, सो इन दिस पोजीशन यू गो, ब्रीद इन, टेक इट ऑल द वे अप, गिव ऑल द प्रेशर एट योर बैक, ब्रीद आउट, टेक योर बैक अप, नेक डाउन, ब्रीद इन, टेक इट ऑल द वे अप, ब्रीद आउट. सांस को अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें. सांस को अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें. सो दिस इज कॉल्ड कैट एंड कैमल एक्सरसाइज. अब वक्त है हमारे पॉपुलर सेगमेंट योर हेल्थ काउंटर का. आज का टॉपिक है क्रोनिकल्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, थर्ड आई पर्सपेक्टिव with Dr. Amitabh Banerjee. Now, looking back, the last pandemic, that is plague pandemic, organizations like the World Health Organizations did pretty good job. That's what we are told as per reported data. Now, how do you view, would you view the role played by WHO in kinder light, or did they fail? WHO this time didn't get it right. WHO got it right earlier. WHO did not get it right because and WHO also flip-flopped. So that flip-flop itself causes lack of trust. In fact, when the Wuhan was affected, China locked down Hubei. It locked down only one district, and the WHO came down heavily on China. It said that this is unscientific and WHO never recommends. The Western press also said कि इसे authoritarian.
and it criticized, the WHO criticized. I have got the evidence on it, and but subsequently Italy did the countrywide lockdown. Again they got it wrong, because Italy, they have a very elderly population, and again Italy, the pandemic hit the nursing homes. Average age of death in Italy was 80 years, and that had a very high, particularly case fatality rate in hospitals. In fact, one initial paper gave out the case fatality as 20%. So that was alarming, and the models took this as a year and predicted a catastrophe for the whole world. And the WHO did not have a proper surveillance system to really cross-check this and see the finer points, the demographic profile and who are dying. So it was a chaotic. And so WHO failed miserably in this pandemic. I vividly remember in the initial episode of Health for All, you had created a flutter by saying that lockdowns do not serve any purpose. And in the same episode, you had mentioned that the way out is to attain herd immunity. What is your current views on herd immunity? The data reinforces those views. If you see the Worldometer data, it is in the public domain. Like those countries, there's a published study also that data from 68 countries and 2947 American counties. They tried to correlate the premise was, while denying, those who are denying herd immunity, their premise was it is only vaccine which can achieve herd immunity. Herd immunity can be achieved either by recovery after natural infection and by vaccination. So their premise was that vaccine is the only panacea which will achieve herd immunity. But the recent data, it is available in the public domain from 68 countries and 2947, there's a published paper on it. It does not show any correlation with the level of population level immunization and the trends and the mortality from COVID-19. And you can have a look, even if you just have a quick glance at the Worldometer data, you see this heavily vaccinated countries like Israel, they were into the 4th dose. They are having a peak, after the peak it comes down naturally, because even if the vaccine fails, large number of people get infected and ipso facto they get the herd immunity from natural infection. Some due to vaccine immunity and more strongly due to the natural infection. And then subsequently studies from Israel, it has established that the natural infection gives 13 to 27 times more robust immunity than vaccine-induced immunity. So these are scientific papers and established evidence. Welcome back. We now move on to session 3. Session 3 is an important session on global re-emergence of COVID-19. How is India placed? डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो सरकार ने फैसला लिया है सभी एडल्ट्स को बूस्टर डोज देने का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसका एक साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए. वी आर डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर हम लोग हैं, तो ये देखना चाहिए कि क्या बूस्टर का कंसेप्ट इसलिए है या प्रिकॉशनरी डोज का, कि अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इसको दे के प्रिवेंट करेंगे. कई लोग ये भी कर रहे हैं कि बूस्टर देने से ही हम 4th वेव जो आने वाला है उसको रोक सकते हैं. तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ससेप्टेबल है. ससेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि या तो इन्फेक्शन हो या सीवियरिटी और डेथ हो उनकी. इस पर डिपेंड करता है. अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली कोई भी वेव आ सकती है. अगर ससेप्टेबिलिटी नहीं, ससेप्टेबिलिटी हम कैसे रिड्यूस करते हैं? 2 तरीके से होती है, वैक्सीन से और नेचुरल इम्यूनिटी जो मिलती है इसके बाद इन्फेक्शन होने के बाद. नेचुरल इम्यूनिटी के भी एविडेंसेस हैं, वैक्सीन के भी एविडेंसेस हैं. वैक्सीन का एविडेंस अभी तक जो भी एक ग्लोबल है कि 80 to 90% सीवियरिटी एंड डेथ रिड्यूस करता है, लेकिन इन्फेक्शन को रोकने में कारगर नहीं है. वह जो है ऑलमोस्ट न के बराबर है, लेकिन इसकी इफेक्ट जो है 6 मंथ के बाद कम होने लगता है वैक्सीन का जो है ये. तो इसलिए 3rd डोज बूस्टर या अभी 4th डोज भी कुछ कंट्री ने देना शुरू कर दिया, ऑलरेडी दे दिया है, और हो सकता है एवरी 6 मंथ और 9 मंथ सब्सिक्वेंट डोजेस भी देते रहें. ये वैक्सीन के बारे में एविडेंस है.
According to a recent study, the SARS-CoV-2, the virus causing COVID-19, can infect cells of the heart's natural pacemaker that maintains rhythmic beat, setting off pheroptosis or self-destruction process causing arrhythmias. What is your view on this? As we know, this disease affects all the organs, predominantly the inner linings of blood vessels, and heart also. There are enough studies, even MRI based, to show that there is scarring of heart के अंदर जो muscle है उसके अंदर scarring हो सकती है, and you can have arrhythmias because of that. Muscle weakness हो सकती है. So it can even have changes जो कि mimic करें heart attack को. So this is about 5-10% will have that, and that is why जो जैसे आपने बताया long COVID cases, हर एक जो long COVID case हमें कहता है कि सांस चढ़ रहा है, breathlessness हो रही है, तो echo becomes an integral part of the examination, ECG echo, कि भी कोई उसकी heart weak तो नहीं हो गई है. क्या एक डायबिटिक पर्सन अगर उनका डायबिटीज नियंत्रित नहीं है तो क्या वो लॉन्ग कोविड के लिए ज्यादा वल्नरेबल है? सर, हमने इसमें दो चीज़ें देखी. कोविड में जो अभी तक जर्नी रही है 2 साल की, उसमें हम दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट समझ में आई हैं वो ये है, एक तो होस्ट रिस्पॉन्स होता है और एक पैथोजन रिस्पॉन्स होता है. तो पैथोजन रिस्पॉन्स में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं. जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा होस्ट रिस्पॉन्स पे टारगेट हुई है. होस्ट रिस्पॉन्स पे टारगेट हुई हैं, तो वो कैसे टारगेट हुई है, क्या कर रही है? जो भी चीज़ें आप दे रहे हो, सपोर्टिव दे रहे हो, विटामिन डी दे रहे हो, विटामिन सी, जिंक, क्वेरसिटिन, वो सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन कम कर रही हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर रही हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हो, स्टीरॉइड्स दे रहे हो, तो स्टीरॉइड्स का भी एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है. तो ये जो चीज़ें हैं, तो जो बेसिक अंडरलाइंग कॉज हो गया, इन्फ्लेमेशन आप कम कर रहे हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप कम कर रहे हो, इमोशनल स्ट्रेस आप कम कर रहे हो. जैसे कि आप ये देखो कि SSRI करके क्लास ऑफ मेडिसिन है जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी में देते हैं, उसके बेनिफिट्स देखे गए हैं कोविड-19 के अंदर. तो ये जो चीज़ें बेस लाइन पे काम कर रही हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर रहा है, इमोशनल स्ट्रेस कम कर रहा है, सो यही अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स हैं जो कि डायबिटीज को वर्सन करते हैं. As a renowned epidemiologist working as project lead European Union project with Center for Youth and Social Development Bhubaneswar, what exactly is your role so far as COVID is concerned? So as of now, I've joined an organization where this particular organization, CYSD, has been reaching out to the tribal population in and around Odisha. And so they've been reaching out to the complete downtrodden and trying to put them up and keep them afloat. And in terms of where I kick in is obviously social development, but also in terms of health, where this organization that I'm working for now has been having a lot of vaccine drives in convergence with the Odisha government for the tribal population in the past during the COVID, and they've been doing a great job. CYSD has been doing a great job in terms of vaccinating tribal population, and I keep going to these community meetings in these villages where I get to know that our organization they have licensed with the government and converged with the government and have had vaccination drives, successful vaccination drives for over 90% for the second dose, which they've reached out to everyone possible in the tribal belt, which is a commendable job. So when I finished my vaccine consultancy with TCI Foundation, and whereas the organization that I'm working for now is absolutely at the forefront of vaccinating people who really need it in the first place. And when I interacted with a lot of people at the tribal belts, they have 100% knowledge about what has happened with COVID. They know what COVID is now because of these organizations reaching out at the base level with convergence with the government, of course. And they know that there is also a precautionary dose that's coming up, which is the way forward.